Hello everyone, I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by FinLearn Academy. In a previous week, we have discussed that 70,170 immediate hurdle level hai. If the prices move above that particular point, so that can be an extension up to the 70,450 to 70,500 level. So we have seen some sorts of reactions from that level and declining momentum we have witnessed. So in this video, we are going to discuss in a brief what has happened in this week, what is the view for the coming week, sector specific momentum and stock of the week. So इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीवियस वीक में सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन रहे हुए थे। वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट में 1.25% की बढ़ोतरी देखने मिली हुई है। FII के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो FII की सेलिंग काफी कम रही हुई, दैट इज 36 करोड़, वेयरएज DI की काफी अच्छी बाइंग रही है 1024 करोड़ की। ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखते हैं तो वो डेटा कुछ एक्सट्रीम और थोड़ी सी वियर्ड भी है, बिकॉज राइट नाउ हमारा ATM प्राइस 70,300 लेवल पे है और ज़्यादातर एक्टिविटी हमें 18,000 के कॉल ऑप्शंस का बेस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने मिला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा चेंज भी हमें उसी स्ट्राइक प्राइस में देखने मिली हुई है। उससे नेक्स्ट बेस नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे हाईएस्ट बेस हमें देखने मिला हुआ है, सो दैट इज 70,500 लेवल एंड इक्विवेलेंटली काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी हमने यहाँ पे देखने मिली हुई है। सो दैट इज एन काइंड ऑफ पोटेंशियल रेजिस्टेंस बैंड वी कैन सी। पुट का बेस काफ़ी 17,000 के यहाँ पे बना हुआ है, बट द चेंज ऑफ एक्टिविटी इज हैपनिंग नियर अबाउट बाय 70,200 लेवल्स काइंड्स ऑफ थिंग्स। लेकिन एट द एंड ऑफ वीक पे मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है। वी कैन सी दैट के जो US मार्केट थी, दे आर अ लिटिल बिट डाउन, मींस क्वाइट रिसेंटली डाउन। Nasdaq नियर टू द 4% डाउन, जबकि डाउ जोन्स और S&P 500 2% के आसपास में हमें डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिल रहा है। सो इट कैन हैव द नेगेटिव रिपरकशन ऑन द मंडे एंड स्पेसिफिकली एग्जिट निफ्टी भी अभी 244 पॉइंट से यानी 1.5% के अराउंड से नेगेटिव में चल रही है। सो दिस इंडिकेट्स अ काइंड ऑफ वीकर ओपनिंग फॉर आवर वीक। इन अ प्रीवियस वीक हमने ये चार्ट रिलीज किया था विच शोज दैट कि कुछ एक रिपीटेटिव पैटर्न्स हमें देखने मिल रही है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रीवियस टॉप था, दैट इज इन फर्स्ट टाइम द 18,300 लेवल हैज रिएक्टेड और वहां से हमें काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने मिला था ऑल द वे टुवर्ड्स इन 15,200 लेवल तक। सो रिदम हमें देखने मिली थी। व्हाट वाज दैट रिदम कि प्राइजेस ने अपने रेजिस्टेंस से रिएक्ट किया हुआ था, देन अपॉन कुछ दिनों के लिए 5 to 7 days there has been some sorts of negative momentum और उसके बाद में एक strong gap down opening हमें देखने मिली थी। Then afterwards prices has traded into the sideways to a little bit positive bias, prices थोड़े से ऊपर में पुल किए, ये जो gap था that got filled around this one and again it has resumed its declining momentum. So कुछ टाइम के लिए there was a very extreme amount of volatility that we have seen, लेकिन बाद में प्राइस का जो रुख था, रुझान था, वो नीचे की ओर में आता था। तो फिर से वही एक पैटर्न रिपीट होते हुए देखने मिली थी कि there was a kind of a declining momentum, प्राइजेस ने यहाँ पे गैप डाउन किया, प्राइजेस हैज कम डाउन, प्राइजेस के काफ़ी सारा साइडवेज कंसोलिडेशन पैच देखने मिला, प्राइजेस हैज रिकवर्ड ऑन द हाई साइड, गैप फिल हो गया एंड देन अगेन फिर से वही रिदम कि प्राइजेस का डिक्लाइनिंग मोमेंटम, गैप डाउन, फिर से प्राइजेस का काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन पैच, प्राइजेस का ऊपर जाना, गैप फिल होना और रिएक्शन जाना। तो यहाँ से जो रिएक्शन आता है दैट इज व्हाट इज नेगेटिव मोमेंटम, और ये नेगेटिव मोमेंटम हम तब तक मान सकते हैं जब तक आपका गैप फिल करने वाली जो कैंडल का हाई इंटैक्ट रहता है। वंस दैट पर्टिकुलर थिंग मूव्स ऑन द हाई साइड देन वी हैव टू नेगेट आवर नेगेटिव व्यू एंड दिस इज व्हाट इज रिजम्पशन ऑफ अ फ्रेश अपसाइड मोमेंटम। सो दिस इज हाउ इन अ प्रीवियस fall the things has happened now in a recent attempt also the same kind of formation that we are witnessing कि फिर से 18,200 के अराउंड पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस देखने मिला, couple of days there is a declining momentum, यहाँ पे गैप डाउन देखने मिला, कुछ टाइम का एक कंसोलिडेशन पैच हुआ, प्राइसेस हैज फिल्ड दिस गैप एंड ऑल द वे इट कम टू 70,500 लेवल और वहाँ से हमें कुछ एक रिएक्शंस देखने मिला हुआ है गैप फिल करें नीचे की ओर एंड at the weekend we are able to see that कि global markets की conditions खराब है, so we are going to see a certain kind of negative reactions on a Monday's trading session. So it was confirming that कि after filling the gap जो हमारा recent high बना था 70,420 30 के around का, so that is what is very important level. जब तक वो level के हम नीचे रहेंगे व्यू sideways to negative रहेगा। हो सकता है कि हमें एक
अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने मिले, बिकॉज ये वॉलेटिलिटी हमने पहले भी देखी हुई है. सो इन दिस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन पैच देयर वाज एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी. यहाँ पे भी काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी थी, यहाँ पे भी काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी थी, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी के बायस भी बना हुआ था. बट ये स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट हो गया है. सो एज फार एज इंडेक्स इज बिलो द 17,500 लेवल, द व्यू इज नेगेटिव. द वेरी फर्स्ट टारगेट इज 16,800 लेवल. 16,800 का लेवल ब्रीच हो जाता है, देन वी हैव द नेक्स्ट बेस्ट लेवल नियर अबाउट बाय द 16,000 टू 16,200 लेवल. वो बात की बात है, बट एज ऑफ नाउ व्यू इज अ नेगेटिव एज फार एज 17,500 लेवल इज इंटैक्ट. 17,500 होने on upside, 70,200 लेवल, 18,100 लेवल, दैट इज व्हाट अ नेक्स्ट बेस्ट पोटेंशियल रेशंस लेवल. तो आने वाले वीक का रुझान साइडवेज टू नेगेटिव, लेकिन नेगेटिविटी पे जोर थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है. तो दिस व्हाट द व्यू दैट वी आर हैविंग, एंड ये मार्केट का हमने पूरे स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके दिस इज व्हाट द थिंग दैट वी आर एबल टू डिराइव आउट ऑफ इट. फ्रॉम अ सेक्टर स्पेसिफिक हम अगर बात करते हैं, तो दिस वीक वॉज ऑफ लाइक फॉर कमोडिटीज एंड करेंसीज वी कैन से. इस वीक में कमोडिटीज में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला था. सो लेट्स से इफ वी जस्ट arrange its order from the top to down. So here we understand that crude oil के almost momentum 9% से हुई थी. Silver is up by near to the 7%, aluminum 4%, gold is up by 3%, and from a technically also they are bouncing from a very good level. So there is a certain kind of shift is happening कि commodities is again they are finding their tractions and prices थोड़े से costlier हो रहे हैं. They have started to pick up its momentum. Equity के लिए this month was in kind of the so thing, because जो sector ने outperform किया हुआ था, it doesn't have that much kind of the weightage into the market. So let's say media sector has up by near to the 5%. CPSC stock again it is not having that much momentum, up by 5%. The reality stocks not much weightage, up by 3% kind of thing. आईटी सेक्टर्स जो काफ़ी डिफेंसिवली रहे हुए थे या फिर काफ़ी बीटन डाउन पहले के सेक्टर थे, दे हैव स्टार्टेड टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ ट्रैक्शन, बट स्टिल दे आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स. एंड लुकिंग एट एन ओवर पीरियड ऑफ end of the week we see this there is some sorts of pain in the market that we are witnessing. तो हो सकता है कि in a coming week there can be some sorts of pressures. So let's pay attention to the sectors जो जिन्होंने अभी तक as a list perform किया हुआ है. So we can say that FMCG, but FMCG and consumers in this particular time they normally defend the things, because last time के declining momentums ने हमने observe किया हुआ था कि when the market is moving up we see that कि financial stocks, auto stocks, metal stocks, reality stocks, they moves up. But when those stocks comes down or market comes down, those sectors comes down, and we find a certain kind of a defensive approach in the sector like an FMCG हो गया, pharma हो गया, and IT sectors. So in this week as the market was up, so they have a kind of a negative momentum, but overall in a weaker market they normally defend the things. Now looking at some another sectors like let's say PSU banks. So PSU bank is in a kind of very decently moving sector right now, but from a chart perspective it has come to the very important resistance level. So let's say for example if I look at the Nifty PSU banks, so they have been into the very strong upside momentum. They have given the kind of a very strong consolidation range breakout. But if I look at it in a higher time frame chart or a monthly chart kind of thing, so I understand that it has reached to its in a previous starting points. So last time the prices has turned around from this level and prices have hit this level and it is trying to come down. It shows a potentiality of a bull trap kind of scenario, because by giving this breakout it has created a positive scenario, but that upside momentum got stuck at its next best resistance level and we are seeing some sorts of declining momentum. तो इस वीक में मीन्स लेट्स से कमिंग वीक अगर हमें ये डिक्लाइनिंग मोमेंटम नीचे में देखने मिलती है, सो देयर कैन बी अ चांस दैट कि पीएसयू बैंक्स में हमें प्रेशर देखने मिल सकता है, बट वी नीड टू सी सम सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव डिक्लाइनिंग मोमेंटम हैपनिंग इनटू द पीएसयू बैंक्स. So this is what in sector specific momentum that we are witnessing. In a nutshell, the traction is towards in commodities. Equities में थोड़ा सा कूल ऑफ आने वाला है. जो रिस्क ऑन सेक्टर्स हैं वहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल सकता है. लेट्स से फाइनेंशियल सर्विस है, मेटल्स काइंड्स ऑफ थिंग्स. मेटल्स दे आर डूइंग वेल, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल सकता है. दैट इज व्हाट इन ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग. From the
स्टॉक पर्सपेक्टिव एज एन स्टॉक ऑफ द वीक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट स्टॉक्स के पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंटम देखने मिली हुई है एंड वी हैव सीन कि ये स्टॉक पे अल्ट्राटेक ऑन द मंथली चार्ट काफ़ी अच्छा राइज किया हुआ था. सो दिस राइज वी कैन कंसिडर एज एन स्टेज 2 दैट इज इन मार्कअप और अ राइजिंग स्टेज. बट आफ्टर द राइजिंग स्टेज स्टॉक हैज कम अंडर द कंसोलिडेशन पैच. काफ़ी महीनों तक आई थिंक 6 महीने तक प्राइजेस ने ऊपर की लेवल की यहाँ पे कंसोलिडेट किया हुआ है and once the lower band got breached we have started to see the declining momentum. Now as the declining momentum happened, prices has come down again, it has retested this level and showed some sorts of a bearishness. So this is called as a role reversal concept. जो पहले का resistance level था वो as a support level थे, अभी एक resistance level काम कर रहे हैं and prices have started to find some sorts of reactions. ऑन वीकली चार्ट हम देखते हैं कि इसी पैच पे मार्केट ने एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया हुआ है. सो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेलर. नाउ दैट प्रेजेंस ऑफ सेलर इज सो स्ट्रॉन्ग कि अपना जो नीचे का बेस था सो इट हैज टेकन आउट ऑन द लोअर साइड. सो 3 वीक्स अराउंड इट हैज मेड द बेस. सो प्राइजेस ने यहाँ पे हमें नीचे की डिक्लाइन मोमेंटम देखने मिली. नाउ जस्ट coming down to the daily time frame chart, so we understand this कि ये आपका declining momentum हुआ, it has broken its base. Now again prices has come down, it has retested its base and there is some sorts of further declining momentum is happening. This declining momentum is again breached the intermediate levels like this tiny trend lines जो इसके कुछ कुछ छोटे से base बने हुए थे. Kind of potential support level on a very shorter time frame, we can say it has closed below this level, so it indicates a certain kind of weakness in that stock. Now once by looking at in a broader market context, due to the global markets we are going to see some sorts of pressure, so I'm just aligning my view on the negative stock. नेगेटिव स्टॉक में कौन सा स्ट्रक्चर रह सकता है. सो अल्ट्राटेक वाज वन ऑफ देम और यहाँ पे काफ़ी क्लीन नीट एक स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है. सो नाउ द थिंग इज दैट आफ्टर फॉर्मिंग अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडर मार्केट, then understanding the higher time frames and lower time frames, we have formed the view. Now the game is all about the risk reward ratio. So let's say at the current market price if I'm considering the trade, so where can be my stop loss? So stop loss always we put at an immediate high level, so that is all an immediate resistance, so which is all about 6400 level. And as far as support levels are concerned, so immediate support level that we have is around this particular point. So this is what the support level that we are seeing this thing. So this is what the negative was basically the risk reward profile is all about. So here I use the calculator. Let's say here if I'm entering, this is what my stop loss is all about this particular point, and this is what my midpoint of this range as my target. So I find that my risk reward ratio comes near about by 2.3 2.4 kind of thing. I am risking 200 points, whereas I am targeting declining momentum near about by 460 470 points kind of thing. So that makes a good risk reward ratio setup for us. So let's see how the things unfolds in a coming week. So in this week we have discussed about the market, about the sector and about the stock. What is the discussion that we did, that is for the educational purpose only. Thank you so much.